let us start case 5. So in this case सानू की कहंदे आ कि retiring partner is to be paid from cash brought in by the remaining partners and capital ਨੂੰ adjust करना along with the desired minimum cash balance, right? Means जो case 4 and case 5 आ both the cases are similar. दोनों cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ आ कि जो remaining partners ने they will bring in certain amount of cash in order to make the payment to the retiring partner, right? But what is the difference between case 4 and 5? case 4 ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी payment करदियां retiring partner ਨੂੰ ਉਹਦੇ लिए cash जो आ ਉਹ remaining partners लेके आउंदे सीगे and case 5 ਦੇ ਵਿੱਚ definitely they will bring cash but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कुछ हद तक firm भी contribute करूगी, ठीक है? एंड फर्म का असी डिजायर्ड मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना मतलब कुछ पैसे फर्म के बैंक अकाउंट च रखने एंड वो तो बियॉन्ड जो भी मनी है उसी फर्म तो यूज कर लेनी आ ते बाकी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर देंगे ते अपन रिटायरिंग पार्टनर नु पेमेंट कर देंगे. गॉट इट? सो लेट अस सपोज A, B and C are partners and B is retiring from the firm and अपा B नु जो आ 1 लाख पे करना on his retirement, ठीक है? सो की हुंदा सी आ जो भी अमाउंट आ ਇਹ कंट्रीब्यूट कौन करनगे? मिस्टर ए एंड मिस्टर सी ते उन्हां दे इस कंट्रीब्यूशन तो बाद जो कैपिटल आ वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च एडजस्ट हो जानी चाहिए हुंदी आ. सो असी की करदे सीगे जो भी सीडी बैलेंसेस होंदे सीगे ए एंड सी दे उन्हां नु ऐड कर लेंदे सीगे एंड जो कैश असी पे करना वा बी नु, राइट? कैश टू बी brought in ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, amongst the continuing partners ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਵਿਸਟ ਕੀ ਆ ਕੇਸ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ कि B ਨੂੰ पेमेंट करनी आ. सो ਆਪਾਂ फिर तो सपोज कर रहे हैं कि B ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 लाख पे करना. सो इस बारी A and C तो कंट्रीब्यूट करेंगे बट कुछ हद तक जो हेल्प ऑफ फर्म तो हो जूगी. सो लेट अस सपोज कि फर्म दे बैंक बैलेंस दे विच वी हैव 30,000 रुपीज, ओके, एंड उन्होंने सानू लिख के दिता कि मिनिमम बैलेंस जो बैलेंस फर्म च ਅਸੀਂ रिटेन करना ही करना दैट इज 10,000. सो असी की करांगे इस 30,000 जो 10,000 माइनस कर देंगे बिकॉज आ बैलेंस तो असी फर्म च रिटेन करके रखना वा एंड जो 20,000 बचे आ ना वो 20,000 इस बारी फर्म कंट्रीब्यूट करो. सो इस बारी जो A एंड C आ दे विल नॉट ब्रिंग इन होल अमाउंट ऑफ 1 लाख, ठीक है? इस बारी वो 1 लाख की अमाउंट नहीं लेके आएंगे, इस बारी वो रिमेनिंग बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है, दैट इज ऑफ 80,000. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. So in this question they will bring only 80,000, ठीक है, because 20,000 the payment जो आ वो firm the account जो हो जाएगी. So this is the difference between case 5 and case 4. So now let us write the steps of case 5. जी step 1 होगा determination of total capital. सो टोटल कैपिटल च आपां की करांगे सब तो पहला तक कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स जो ने रिमेनिंग पार्टनर्स दियां दैट इज द बैलेंस CD कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ प्लस करांगे अमाउंट to be paid to retiring partner, then plus करांगे required cash और बैंक बैलेंस. सो बेटा ये बैलेंस हमेशा गिवन होगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम बैलेंस टू बी रिटेन्ड, ओके. सो मिनिमम बैलेंस जो असी रिटेन करना वो ऐड करते हैं एंड वी विल डिडक्ट
existing cash or bank balance which will be given in the balance sheet. Okay, सो इस तरीके नाल बट्टा जी आप डिटरमिन करते हैं टोटल कैपिटल एंड जो आ चीज़ आप एडलिस कर रहे हैं अगर तुम बुक चेक करोगे तो बुक की टर्मिनोलॉजी दे विच वो इनू शॉर्टेज ऑफ कैश कहते हैं राइट। सो नेक्स्ट स्टेप्स तो बेटा सेम रहेंगे। स्टेप 2 विल बी डिवाइड द total capital among remaining partners in new ratio. Okay, and step 3 is any surplus or deficiency is adjusted through cash account. सो बेटा ये गल याद रखियो कि केस 4 एंड केस 5 दे विच जो भी आप सरप्लस और डेफिशिएंसी एडजस्ट करते हैं वो हमेशा कैश अकाउंट ओपन करके करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53। So let us read the question first. Sushil, Satish and Sameer are partners and their old ratio is 5:3:2. And who is retiring? Satish. So Satish retires on 1st April from the firm, on which date capitals of Sushil, Satish and Sameer after all adjustments are 1,03,680, 87840 and 26,880. The cash in bank balance on the date was 9,600. So this is the existing cash balance, right? Satish is to be paid through amount brought in by Sushil and Sameer in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which will be new ratio be given. Calculate the amount to be paid or to be brought in by the continuing partners. And देखो बेटा they have given us if minimum cash or bank balance of 7,200 was to be maintained. So ਜਦੋਂ मैं minimum cash balance वाली line read करदी हां तो इत्थों मैनू पता चलदा that they are talking about case 5 of capital adjustment, right? So now let us solve this question. So first of all let us determine the total capital. सो टोटल कैपिटल लिए मैं थोड़ा की फॉर्मूला लिखवाया बेटा। सो असी ओल्ड पार्टनर्स दे सीडीज ऐड करांगे। सतीश इज रिटायरिंग ना, सो सुशील दा सीडी कितना वा 1,03,680 एंड समीर दा कितना 26,880 एंड देन शॉर्टेज डिटरमिन करन लिए असी की करदे हां बेटा जी सब तो पहला था कैश टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर that is 87840, right? Then ਅਸੀਂ plus ਕਰਦੇ ਹਾਂ minimum cash balance to be retained or to be maintained 7,200 and minus ਕਰਦੇ ਹਾਂ existing cash balance. So beta this is 2,16,000, right? Now we will distribute this amount amongst the continuing partners. So continuing partners कौन ने? Sushil and Sameer. So first of all, their new capital. New capital you will distribute this 2,16,000 in their new profit sharing ratio, which is 3:2. So 2,16,000 into 3/5 will be Sushil's capital. And 2,16,000 into 2/5 will be Sameer's capital. 1,29,600. And Sameer da कितना आ गया 86,400. Then बेटा जी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ adjusted capital minus कर दोगे and you will
Get your answer. ये surplus आ रहा है या deficiency आ रही है? So adjusted capital सुशील दी हैगी आ 1,03,680 and समीर दी हैगी आ 26,880. Right? So दोनों दी adjusted capital घट बन रही है. So they are supposed to bring in more cash. So we will get cash to be brought in. So Sushil will bring 25,920 and Sameer will bring 59,520. So entry will be, because they will bring in cash, so cash will be debited. पैसे आ रहे हैं funds and Sushil and Sameer दे capital account जो ने वो credit हो जाएंगे. Sushil's capital account to Sameer's capital account. Right? 25920 59520. It will be 85,440. So beta, let us now solve the comprehensive question of case 5. So in this question they have given us Suraj, Pawan and Kamal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. And who is retiring? Pawan is retiring. Okay. And in the balance sheet we have general reserve जो बेटा आप distribute करनी है, and we have old goodwill जो भी आप write off करनी है. Right? And then additional points की given है. Provision for doubtful debts to be raised by 1,000. So by लिखिया, so directly सानू value given है, जिस value दे नाल PDD increase हो रही है. ठीक है? So direct लिख दांगे, stock नू reduce करना 10% नाल and furniture नू 5% नाल reduce करना. एक outstanding claim है damages दा 1100 दा and it is to be provided for, liability create होगी. Creditors will be written back by 6,000. 6,000 दिन creditors reduce करने हैं and बेटा firm the goodwill कितनी है 22,000. We will calculate Pawan's share. So Pawan's share is 22,000 into 2 by 6. So it will be 7,333. So मैं round off करके इतनी value ले ली है. ठीक है? And gaining to retiring करना. So goodwill दी treatment दी entry की होगी सूरज, कमल to Pawan. Right? Goodwill amount is 7,333 and they will share in 3:1. So what will be the amount? 1,833,500 is here. ठीक है? So ये हो गया बेटा goodwill दा treatment. आप इत्थे लिख लिया है पर तुसी proper working notes लिखना है. Right? So now we have the next point of capital adjustment. So they have given us Pawan is paid in full with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their PSR and cash in hand remains at 10,000. This is the minimum balance to be retained. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ line read ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ that this is the question of case 5, right? And the cash balance already existing in the books of accounts is 18,000 and 10,000 उन्होंने maintain करना, so 8,000 they can use ना. ठीक है? And then ਆਪਾਂ देख लांगे कि shortage of cash कितनी बनती है, वो ਆਪਾਂ CD balance से plus करांगे, we will get the value of total capital, right? So prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So let us first prepare the revaluation account. So beta revaluation account here, first of all they have given us PDD to be raised.
by 1000. So we will write on debit side to PDD and it is to be raised by 1000. So I'm repeating again, अगर asset decrease और liability increase ਹੁੰਦੀ ਆ debit side record ਕਰਦੇ ਆ, asset increase और liability decrease ਹੁੰਦੀ ਆ credit side record ਕਰਦੇ ਆ. So next point is stock ਨੂੰ reduce करना 10% ਨਾਲ. So the value of stock is 18,000, 10% will be 1800. Furniture ਨੂੰ reduce करना बेटा जी 5% now. So value of furniture is 30,000. 3 5s are 15. It will be 1500. Then outstanding claim for damages. So outstanding claim for damages rupees 1100. Okay. Creditors are to be written back. So liability decrease हो रही है. We will record on credit side with amount 6,000. Okay. So all the points of evaluation are done. We will calculate the profit or loss. So as questions we are getting profit that we will distribute amongst the partners. Suraj, Pawan, Kamal. So the old ratio is 3:2:1. So this will be 300, 200 and 100. Okay. So here we will write the total. Let us prepare partners capital account now. So we have three partners, Suraj, Pawan, Kamal. Who is retiring? Pawan is retiring. So first of all, we will write the brought down balances by balance BD 40,000, 40,000, 30,000. Now we will write the revaluation profit 300, 200, 100. है ना? So then we will record the entry of goodwill. So बेटा कौन कितना contribute कर रहे हैं? 5518 5500 So here we will write 2 Pawan 5500 1832. Okay. Then beta they have given us general reserve in the balance sheet that we will distribute amongst all the partners in their old profit sharing ratio. Value of general reserve is 12,000. So key values are जाएंगे बेटा 6,000, 4,000, 2,000. Then we have old goodwill. Goodwill the value was 10,000. 1667 3333 and this is 5,000. Right? Clear beta? So now let us adjust the capitals. So beta for capital adjustment, first of all we need to determine the value of the total capital of the firm. So in case 5 अपन total capital किमें determine कर दें हैं? The rough series of old partners. This is 35,800 plus Kamal's CD 28,600.
600. Then cash to be paid to retiring partner. What is the amount? So this is 48,200. Then plus करेंगे minimum cash balance to be maintained, which is 10,000. Then beta minus करेंगे the existing cash balance, which is 18,000. Now tell me what is the value of the total capital of the new firm? 1,04,600. Right. Now we will distribute this total capital amongst the continuing partners in their new profit sharing ratio. So new ratio will be 3:1. 26,150 for Kamal and 7,8,450 for Suraj. Now let us calculate the surplus or deficiency. Right. So as you can see, adjusted capital of Suraj is 35,800, but capital बढ़नी चाहिए 78,450. So he need to bring in certain amount of cash that we can calculate by deducting 35,800 from 78,450, which is 42,650. And as you can compare Kamal's new capital and adjusted capital, we can see कि ओदी new capital बन रही है 26,150, but adjusted है 28,600. So इधर तो surplus बच रहा, so means ये कुछ cash जो है withdraw कर लूँगा, ठीक है? 28,600 जो दा balance है, new capital है 26,150, so he will withdraw 2450 in order to make their capital proportionate in the new profit sharing ratio. Okay. So beta, let us prepare the balance sheet. So for balance sheet, first of all, we will write the capitals of the continuing partners, Suraj and Kamal. Right. And what is the amount of capital? 78,450, 26,150, and the total is 1,04,600. Then they have given us creditors. Creditors write back हो गए सी 6,000 dinar, so we are left with 40,000. Okay. Then beta ji general reserve we have already distributed, and एक new liability create हुई सीगी outstanding claim for damages, right, with amount 1,100. Then beta इस question ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cash in hand कितना balance लिखते हैं? The minimum balance to be maintained. Then we have debtors, amount is 25,000. And PDDs ਦੇ ਵਿੱਚ adjustment given ਸੀ ना कि 1,000 ਦੇ ਨਾਲ provision increase हो रही है, so now we will write 4,000 here, and the debtors are 21,000. Then we have stock 10% ਨਾਲ decrease हो गया सी, 18,000 minus 1,800, 16,200. Furniture 5% ਨਾਲ decrease होया सी, so this will be 28,500. Then we have machinery 70,000, and goodwill आप already write off कर चुके हैं. So now tell me what is the total of the balance sheet? 1,45,700. So with this, question is over.